हमारे मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, एग्ज़ामिनेशन में हम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमारा जो है रिलेशन जो है अच्छा फ्रेंड्स के साथ नहीं रहता, फैमिली के साथ नहीं रहता है। मुझे फाइनेंशियल इश्यू है, मुझे अदर फैमिली इश्यू हैं। So there are so many problems which is the students are facing a lot of difficulties. So for that we need to solve the problem, and then what are the key techniques? Here I am going to explain you in these videos. Hi dear students, my name is Mr. Nehal Ahmed, educationalist and founder of Educulate Academy. The mission of our academy is to empower the students so that they can success in their bright futures. Till now, I have already trained more than 25,000 students through all my entire 15 years of experience. Here I am going to take this topic called for 5 problem solving skills. यहाँ जो 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे जो बहुत काफ़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट जो फेस करते हैं डे बाय डे, तो उनके लिए जो है हमने ये सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसको किस तरीके से प्रॉब्लम को किस तरह से जो हम उसको आइडेंटिफाई करना और हर तरीके के प्रॉब्लम को हम किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम जो है हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमें हर जगह मिलने को रहता है। सो हाउ वी शुड हैव टू टेक केयर and then how to overcome all this problem. So in this student performance enhancement training program, so this is the fourth topic we are going to discuss here. Before already I have discussed about that how we have learned quickly, that is quick learning methodology skills, and then also we have learned about the deep thinking skills, that where we have already discussed deeply about the critical thinking and creative thinking skills and all, and then also we have discussed in the previous video for how we can enhance our memory skills. Okay, so this is the next topic, that's very most important topic which is required for our students. So for the student I did a lot of deep research, and then I just came to this conclusion that what are the things which is required for solving these skills. First of all, we take for problem solving skill. The word problem is one type of negative words. We try to understand it. So the moment we'll take for negative words, जैसे negative words हमारे माइंड को आता है तो हिपोकैम्पस जो है हमसे नेगेटिव केमिकल्स रिएक्शन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड को जो है वो जो मेमोरी जो है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। सो इसलिए जो है हमको किसी भी तरीके के जो है नेगेटिव वर्ड्स को हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अपने माइंड को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय वी शुड अंडरस्टैंड दैट नेगेटिव वर्ड को हमको पहले पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। तो वी शुड नॉट कंसिडर एज ए प्रॉब्लम बिकॉज द प्रॉब्लम आ गया तो फिर हम जो है अनएबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, बट एनीवे प्रॉब्लम है तो इसलिए हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट्स व्हाट। So what I need to do is, what I would suggest is, you should consider as problem as a positive words. That is, you should consider as a opportunities. That if we'll take for more problem, and then we can capable to solve more problem, then we are become more expertise, and then we'll become more champion, more genius, राइट। सो हमको जो है हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है और हर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। उससे हमें फियर नहीं होना है, क्योंकि जैसे हम फियर होना शुरू करेंगे हमारे माइंड जो है हमारे मेमोरी जो पार्ट होता है ब्रेन का उसको डैमेज करना शुरू करता है। इसके वजह से जो है हमें जो है वी कैन इजीली फॉरगेट एनी थिंग्स,
ठीक है, कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज that we are taking this word as negatives, and then mind tendency is to forget as soon as possible. Okay, तो वो उसको जो है मेमोरी जो है रिटेन नहीं कर पाता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए जो है हमको जो है उसको वी शुड नॉट फेयर एट ऑल फॉर एनी टर्म्स, इफ एनी चैलेंजेस हैज कम लेट फेस इट, दैट्स इट। ठीक है, और इसको हम अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हैं। दैट्स द रीजन समवन सेड दैट प्रॉब्लम्स आर ओनली द अपॉर्चुनिटीज in work clothes. Okay, sometimes we say that all life is a problem solving, लाइफ में है तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही, प्रॉब्लम नहीं रहा तो फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं, इसलिए वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, एंड आल्सो यू नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम, नॉट द ब्लेम, राइट? सो दिस आर दी सम वर्ड्स, ओके, सम फ्रेजेस, अगर हम इसको हम करेंगे तो इसको पॉजिटिव, तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम जो काफी क्रिटिकल सिचुएशन होता है, काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसको हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टुमारो आई हैव द एग्जाम एंड देन आई कुडंट पे द स्कूल फीस, तो क्या करेंगे? This is a big problem. How should I solve? Sal said that solve this problem. Nothing. You should take it positive. Take the challenges. Okay, put your all the effort. Try to get the fees. Right. So simple is just get money from your parents and then uh, submit at your school. That's it. Okay. This is the solution. But just this is the fun. Okay, so anyway, some parents may not able to arrange the fees, it's very difficult, and then at that time you need not be panicked, right? You are the student, you should not divert your mind in that negative track. Whatever you are doing, you do your work, you prepare your subjects, you just read it and then prepare for that thing. Okay, if you are unable to pay the fees and all, try your best effort, at least request your that head of your institution and then request or get help from someone. Okay, if you are unable to arrange that anything to pay the fees and all, definitely you will get the help. In spite, in extreme case, if you are unable to get it, just do one thing, that just trust on the Almighty, He will help you, or say your subconscious mind that arrange this problem, the problem will get solved. So this is one kind of example which I said. So you should need not be stressed at all. So be calm and then do your work, put all the efforts, try to get help someone else. This is the way you can able to solve any problem. Anyway, so anyway, if any problem will come, so what are the steps we need to follow up, right? So apart from this is the positive aspect, positive attitude, we should have to accept it, that thing, वो मैं बोला कि वो पॉजिटिव जो है हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उस हिसाब से करना है। उसके बाद लेकिन जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने का सम प्रोसीजर है, वी नीड टू फॉलो इट। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो। फर्स्ट थिंग दैट आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, मेरा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सो दैट्स द रीजन आइंस्टाइन से दैट if he'll given for 1 hour to solve any problem, he will spend 55 minutes time only for thinking about the problem, and he will take only 5 minutes time to give the solution. तो मतलब क्या है कि हमको आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, मतलब आइंस्टाइन बोलता है कि हमको जो अगर 1 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मुझे टाइम दिया जाए तो मैं 55 मिनट जो है प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा और 5 मिनट जो है उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। तो मतलब ये कि वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द करेक्ट डायरेक्शन। उसका प्रोसेस क्या, हम कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो वी कैन प्रोसेस बाय आस्किंग द 5 व्हाइज। ओके, वी शुड आस्क द क्वेश्चन by what called why 5 times. For example, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट द गुड मार्क्स in my examination. You should ask why. What is the answer for this? I couldn't understand the concept. This is the answer. Again ask for why. Second answer might be there. क्या आएगा? So I may not able to understand. I may not able to prepare the subject properly. This is the second answer for the why. Third time again you ask why. What could be the third answer for why? That maybe I may not able to have that correct material with me. Like
then fourth time also they come that what is the answer, why still I am not able to perform well, I may not able to spend much time on the study. Likewise, you have to ask the 5 times why about your problems. So whatever the alternative solution you get, you just write down all those things and then find out which one is the more relevant. And you know that what is the should be the answer for that. Okay. So first technique is that we should have to ask 5 whys so that you just split it. Or other way also you can see that if any problem is very big, you make it a small part. That's what a small part making it. This is the 5 whys only it can give. If you split 5 times for why will just ask 5 times and then give the answer, and then again you just deep research find out what is the your feasible solution for that. वो क्या जो solution उसका रहेगा, आप जो 5 टाइम क्वेश्चन करोगे तो उसमें से आइडेंटिफाई कर लो. दिस इज द वन स्किल टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम. कैसे प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करना भी वो स्किल है. हमारा प्रॉब्लम कुछ और रहता है, हम लेकिन हम जो है सोल्यूशन कुछ और दे देते हैं. ठीक है, राइट. मुझे फीवर है, मुझे फीवर का मेडिसिन खाना, लेकिन जो है डॉक्टर ने कुछ मुझे कफ का या कोल्ड का मेडिसिन दे दिया, तो मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी हमारा डिफरेंट है. प्रॉब्लम हमारा जो रहेगा उसी से रिलेटेड हमको उसका सोल्यूशन रहना चाहिए. तो ये प्रोसेस है. नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट आल्सो यू शुड हैव टू आस्क. कॉज एंड इफेक्ट जो क्वेश्चन है वाई क्वेश्चन करो, उसका जो कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेटेड है उसको फाइंड आउट कर लिया. So this is the one is done. So the first technique is to identify your problem, right? So next one is your analyze problem. Okay, so analyze problem, what this is the main cause of the problem or root cause you should have to find. Analyze problem, that means what is the main root or cause of this problem, उसको find करना है. This is the second steps. ठीक है. थर्ड वन इज योर सॉल्व इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फर्स्ट. जो भी है तुम्हारा प्रॉब्लम जो भी है उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम को पहले करना है. क्योंकि मान लीजिए तुम्हें टाइम का प्रॉब्लम हो रहा, तो तुम्हारा काम वक्त पे नहीं हो पा रहा. इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर एंटायर वर्क ऑन टाइम, सो व्हाट इज द दिस फॉर टाइम. सो दैट मीन जो काम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट करो. ओके, राइट. अगर कोई सामने प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और एनी सिचुएशन, यू शुड नॉट बी अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम. अगर आप प्रॉब्लम को जाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है, राइट. सो दैट्स व्हाई यू नीड नॉट बी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, यू जस्ट फेस इट एंड देन एक्सेप्ट इट. दिस इज वन काइंड ऑफ चैलेंज. ओके, सो हमारे पॉलिटिशियन, हमारे मिनिस्टर जो है, इन होल डेज हाउ मेनी प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग. They are have lot of meeting here there. Okay, so hundreds of problems they are solving per day, but why we can't solve 5 problems per day? It's very simple. So they are more experts while solving. So likewise you should accept as a opportunity. You should not take any kind of blame, okay, or negative word. So this is the way. So anyway, so you need not be away from any kind of problem. You should accept it and try to solve in the right direction. So this is the steps I am going to explain. So second, first step is identify your problem. Second one is analyze problem. Third one, solve important problem. Here we see that it may create worry if it is not solved on time. So it's very horrible. The problem should be solved on the time, otherwise it may create some worry. But before that, already I have said you need not be worried. It might be worry happen, but once you accept this is the problem, then the worry will be started. But you need not consider this is a problem, it is the opportunity. You should accept in right direction. The technique already have said earlier. Okay, so should be solved as soon as possible. Try to solve as soon as possible, and then you take for that in right perspective. Then no matter how they are hard, so anyhow you must have to solve it. Otherwise, it may create some panic, right? So you need not accept that, you just divert your mind with the positive. Other the moment you accept, it become it start to give some worry. तुमको वरी देने लगेगा आपको, अगर इसको तुम जो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं करोगे. लेकिन हमने पहले बता दिया कि प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम नहीं लो, इसको अपॉर्चुनिटी लो और इसको अपने माइंड को बोलो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अपने सबकॉन्शियस को बोलो Almighty, you just pray for the God. That is that He is the only solution for each and everything. Okay, this is the solution. Just change your mind. Okay, then don't
hesitate to get help if you can't able to solve it. You get help from your teachers, you get help from your parents, get help from your relatives, get help from your friends, but don't hold it. Try to be solved as soon as possible. Okay, so this is the three techniques. Okay, my dear students, I hope you understood all the three techniques. Then fourth one, generate potential solution. Okay, find out new solution which is best suitable for you, or better to make a list of solution. जो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करो, और उसमें से जो तुमको सुटेबल होगा उसको जस्ट फाइंड आउट, एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व. यू कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय योर ओन, instead of putting the hand on your head. Okay, you just can able to solve the problem by your own. Then making a plan. Okay, you need to make a plan. A goal without a plan is just a wish. Okay, so जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, एंड देन यू हैव टू मेक ए प्लान. उसको क्या प्लान है, क्या उसका राइट डायरेक्शन है, क्या पर्सपेक्टिव है, किस वे में ये ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुड बी एनीथिंग. प्रॉब्लम आपको पता किस तरह के प्रॉब्लम. so my other training I will show the deep knowledge of how we can able to handle various kind of problems, right? So this is a short videos, so I can't able to elaborate much. just छोटे से explain किया है बच्चों. just accept it. Okay, mind can able to do anything. Don't take any word negative. The moment you started to have fear and negative words, then it will become more horrible to manage it. Okay, so you should not take it as negative. Okay, so don't be worried, be happy, and then do your work, your task. Okay, and then find out 5 questions wherever you are stuck in any problem. 5 questions yourself will give only the solution. Hope for the best. Thank you very much for listening my these videos. Wish you all the very best. Thank you.